Hello peoples, welcome back to my channel. It's Sandy and I'm back with another video. Please ignore my face because I am suffering from a very weird problem because कोलकाता में बहुत ज़्यादा ठंडा है. अभी वो ठंडा मेरे मुंह में आके गिरा है तो you can see like it is like messed up. So please ignore this. Today I will be talking about a very interesting topic. My Instagram देख रही थी obviously, and this particular clip came in front of me, and in my head this particular idea popped up that I should talk about this. Let's see the clips. Two clips are there, and then I'll be talking about it. I'll just be giving my perspective. That's it. Let's watch it, and then I'll be talking about it. Did you in the process fall in love with him? Absolutely. Duh, that's a dumb question. I have yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. Right. But tell me something about Amitji. Is he a romantic? No. Not with me. I'm happy, I'm used to this now. Please, after 25 years you want to change, I can't. I'm too old to adjust now to that. I'm used to his ways. I'm happy. How do you rate yourself as a husband? 7.5. Jayaji, how good a How do you husband rate is he? me? 5. Asking the question, Amit's priorities, according to me, are first his parents, his children, and then me. His profession, and then me. Or maybe if there's anybody else, his No valet, profession. his makeup artist, Because and then they me. spend more time or with me his than you do. car, or So as you can see, in the first clip, we saw how Rekha ji is talking about how she madly fell in love with Mr. Bachchan when she was shooting the film with him. And in the second clip, we see how Mrs. Jaya Bachchan is feeling, like how does she feel about her marriage, in the marriage and everything. You can see both are being very blunt, to be honest. मुझे ये situation obviously ये तो मुझे बहुत मतलब हम सबको पता है ये पूरा affair के बारे में. Everyone knows about it. Everyone knows in the industry. Everyone knows like who follows Bollywood and everything. We know everything about this. Now the thing is, narrative चल रहा था. बहुत दिनों से मैंने देखा था कि if you see like there are a lot of clips of Mrs. Jaya Bachchan, whatever we can address her. So you can see like she is very irritated, she is very upset and everything. You can see the clips. I will be adding the clips. फोटो लो, बदतमीजी मत करो, ठीक है? चुप रखो, मुंह बंद रखो, फोटो लो, खत्म. ऐसे कमेंट्स करते रहते हो. We can see that in all the clips she is very agitated, irritated. Paparazzi के ऊपर she is very much angry. लोगों के साथ she is being very blunt and rude. We can see this. Then there is this another narrative about Miss Rekha ji. She is being very graceful and मतलब जब लोगों के साथ she interacts and everything, even when she interacts with Aishwarya, she is very graceful and everything. We can see those clips as well. ये नैरेटिव है कि ये नैरेटिव हो गया कि Jaya Bachchan is very rude and everything, like how Mr. Bachchan stays in the marriage and everything. ये वाला तो एक नैरेटिव है. And then ये रेखा ये भी नैरेटिव है कि मतलब मिस्टर बच्चन को रेखा जी के साथ रहना चाहिए था एंड एवरीथिंग. ये नैरेटिव है सोशल मीडिया में एवरीथिंग. ये वाला नैरेटिव भी है. नाउ इन रिसेंट टाइम्स एक नैरेटिव आया है कि Jaya Bachchan is the one who is the victim and Rekha ji is still being that teenage girl who is still in love because she still talks about being in love with Mr. Bachchan. जी नेहू
कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, I have seen it and we have also seen it. So ये वाला narrative है that she is the victim, like Jaya Bachchan is the victim. She is still being naive and she is still being like that teenage girl because वो जो affair है वो बहुत सालों पहले का है. Why she still being like this and everything. हम लोग ये पूरे नैरेटिव में ये दो वुमेन को हम लोग ब्लेम कर रहे हैं, दो वुमेन को वी आर पिटिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, अभी इस पूरा सिचुएशन में जो मेन कल्प्रिट है दैट इज मिस्टर बच्चन. नो वन रियली टॉक्स अबाउट मिस्टर बच्चन टू बी ऑनेस्ट. He was a married man with 2 children, to be honest. When he was being accused about this affair or whatever, he had Abhishek and Shweta, and he was living his full family life with Miss Jaya. And जब उन्होंने जया जी को he got married to Jaya Bachchan, she was a very big star. ये you have to keep that in mind. And apparently it was also a love marriage, I think so. And to be honest, अमिताभ, मुझे जितना पता है अमिताभ बच्चन was struggling. I think Miss Jaya, like जया बच्चन ने उनको मतलब सपोर्ट किया with the career and everything, जो है पूरा सपोर्ट करके then उसके बाद उनको जो मिला we can see like whatever she got in return. मैंने देखा है कि अमिताभ बच्चन को या फिर मिस्टर बच्चन को उतना मतलब जजमेंट नहीं मिलता है जितना इन दोनों को, या इन दोनों को जितना वो लाइमलाइट में या फिर जजमेंट के लेंस से हम लोग देखते हैं. बट व्हाई नॉट, व्हाई आर वी नॉट जजिंग द main culprit or the man who is the main one who must have instigated or जिसका पूरा योगदान है ये पूरे सिचुएशन में. Why are we not judging him with the same lens, with the same scrutiny that we are judging these two women with? Why are we not questioning him? Why are we not judging him that harshly? Because ऐसा नहीं है कि नहीं आया है अमिताभ बच्चन को या फिर मीम्स में तो आ ही जाते हैं, बट द हार्शनेस आई थिंक दीज टू वुमेन आर बीइंग जज्ड वो ज्यादा है. Mainly, I think Jaya Bachchan is the one who gets judged very harshly, I think very rudely, to be honest, from our end, from the audience's perspective. अभी तो सोशल मीडिया के जमाने में तो छोड़ ही दो, इतना भद्दा कमेंट्स आता है जब वो सब paparazzi का शॉट्स एंड एवरीथिंग सब कुछ आता है, बहुत ही खराब. You don't know this woman has gone through what this woman, like this woman, मतलब this particular woman has got to know that her husband is cheating on her with this woman and full-fledgedly उनका 2 बच्चा है, फैमिली है, सब कुछ है. उस सिचुएशन में how will that woman feel? हमको नहीं पता है. We don't know that how we will feel because we are not in that situation. बट हम लोगों को तो क्या करना, हम लोगों को तो सिर्फ वो कैमरे के मोबाइल फोन के पीछे जस्ट हमको टाइप करना है, वही करना है, वही है. यू डोंट नो, वी डोंट नो, आई ऑल्सो डोंट नो. मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, आई ऑल्सो डोंट नो. व्हेन मतलब वो ना लाइन ड्रॉ करना चाहिए हम लोगों को किसी के लाइफ के बारे में कमेंट करने से पहले. इवन रेखा जी के बारे में अभी जो नैरेटिव है, लाइक शी इज बीइंग वेरी चाइल्डिश एंड इमैच्योर, अभी शी इज बीइंग वेरी ब्लंट अभी तक. व्हाई डज शी टॉक अबाउट दिस अफेयर एंड एवरीथिंग? कुछ हद तक शायद इट इज नॉट राइट, बट देन who are we to judge? We don't know how pure or how true her love was. Even if it was wrong from her end to get involved with a married man, obviously. But we don't know the whole situation. हमको सब कुछ नहीं पता है, हम जज नहीं कर सकते, हम ऊपर से देख के पूरा जजमेंट नहीं पास कर सकते हैं. इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का यही है, इतना जजमेंटल हम नहीं हो सकते जितना जजमेंटल हम होते हैं, क्योंकि you never know, you are in the same position and you never know what you will do. क्या पता आप भी सेम टाइप का रिएक्शन दो, आप भी सेम टाइप का आउटबर्स्ट करो. एंड ये भी हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, these are public figures.
कैमरास हमेशा इनके पीछे घूमते हैं एंड वो स्क्रूटिनी होता है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या ये हो रहा है, इसलिए मतलब सब कुछ आंख में पड़ता है. We are not the ones who are scrutinized. We are not the ones who are celebrities. We are not the ones जिसके पीछे paparazzi या फिर camera people are going and clicking pictures and everything. तो हम जो भी करते हैं वो किसी के आंख में नहीं पड़ता है, तो हम लोगों को वो जजमेंट नहीं मिलता है. बट इफ यू आर इन अ सोसाइटी, इफ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अगर कुछ करोगे तो वो जजमेंट भी तुमको मिलेगा. बट ये लार्जर स्केल में होता है, ये हम लोग बैठ के कर सकते हैं. हम लोगों का क्या है, हम लोग कर देते हैं, भूल जाते हैं, बट अफेक्ट तो उनको होता है ना. ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता चल रहा है या फिर नहीं हो रहा है कुछ. तो एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन. आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन. आई जस्ट वांटेड टू make this video to be mindful about your judgment, to be mindful about what you are putting out in the comment section, in whatever your opinion, whatever the situation, because ये pages and everything, ये सब मतलब ये सब जो इंटरनेट में pages या फिर Instagram pages या फिर YouTube channels होता है, ये लोग तो काट कूट के मतलब पूरा narrative change करके सब कुछ करके इतना खराब एक impression देते हैं और we as a audience हम लोग influence भी हो जाते हैं. Even I also get influenced. Man, I don't get influenced. I do get influenced, but I am trying to teach myself. I am trying to do better. I am just making this video to be better with your judgments, with your comments, with your whatever you are sharing and whatever you are seeing. Do the research and do everything. And I just wanted to do this video about this whole scenario जो बहुत सालों से चलता आ रहा है. Do let me know what are your thoughts. कौन victim है, किसको ये narrative बंद कर देना चाहिए और नहीं बात करना चाहिए, who is the actual victim in this whole situation. Do let me know in the comments, and if you like this video, do like, share and subscribe, and I'll see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye. ऐसा होता है ना तो फिर मैं फोटो देने के लिए जाती हूँ. अगर जब पर्सनल चीज होती तब आप लोग चुपके फोटो लेते हैं. अरे वीडियो बंद करो ना मैडम, बहुत अरे मैं तैयार हूँ.